Hello everyone, welcome to the next lecture on the integral surface. Today I will explain you 10 plus examples how you can find the integral surface which are passing through the given curve. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. In this playlist, partial differential equation, you can find my last lecture integral surface passing through the given curve. Along with that, you can see the integral equations like Lagrange equations and its solutions. तो आज का लेक्चर किसके ऊपर है? We will see how we can find the integral surface of the partial differential equations. For examples, our target is to find the integral surface of the partial differential equation which are passing through these curves. Make sure students, whenever you are looking for the integral surface, you always need the two things. The first one is the linear first order partial differential equation and second is my curve. अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप इंटीग्रल कर्व और इंटीग्रल सरफेस फाइंड कर सकते हो. लाइक इन दिस एग्जांपल नंबर थर्ड, इसमें आपके पास ये जो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x दैट इज गिवन एज ए कर्व, और जो पहली इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, स्मॉल p इंटू कैपिटल क्यू. जब भी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो जिसमें p एंड q की डिग्री आपके पास 1 है, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइन. तो काफी सिंपल है. वी विल अप्लाई द टू स्टेप रूल. सबसे पहले जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आवर टारगेट इज टू राइट द लैग्रैंज ऑक्सिलरी इक्वेशन. फाइन. एंड फाइंड द सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आवर टारगेट इज टू फाइंड द u एंड v आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रैंज इक्वेशंस, और ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय यूजिंग द टाइप 1, टाइप 2 एंड द टाइप 3 मेथड के साथ. इनमें से कोई भी एक मेथड एप्लीकेबल होगा, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस. Based on this solution, we can write the parametric equation of the curve. जो भी आपके पास कर्व होगी, we can write the parametric equation of the curve. I denoted the curve is my say gamma. Fine. Like in this example, that is my curve. Fine. This is my curve. तो आपका टारगेट है इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखना. पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब all the variables you can write in terms of the parameter small t. जैसे आप इसकी वैल्यू पैरामीटर की फॉर्म में लिख दोगे, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई एंड जेड इन द गिवन इक्वेशंस ऑफ द यू एंड वी. फाइन. एंड देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन C1 एंड C2. फाइन. जैसे C1 एंड C2 निकाल दोगे, फाइनली यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, रिप्लेस द C1 विद द वैल्यू u and the v. So we will see how you can solve in a couple of the examples. Now the given surface is given curve is, and this is the linear first order partial differential. So first target is you can write the auxiliary equations. So how you can find the solutions? You can see I can take the first and y and z or third. Fine. इन दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा? y and y will be cancel out. If you take the first and the third, तो आपके पास क्या बच जाएगा? dx divided by 2 into z minus 3 which is equal to dz over 2x minus 3. Can you separate the variable? Yes, you can easily separate the variable. That will be 2x minus 3 into dx which is equal to twice z minus 3 of dz. ऐसा ही आएगा. Now you can integrate them. तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन करके? That will be x square minus 3x which is equal to z square minus 6z plus arbitrary constant. Can you find the value of the C1? तो आपके पास यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z. सिमिलरली इफ यू लुक फॉर द सेकंड एंड द थर्ड, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3 विल बी कैंसल आउट, 1 which is equal to dz over y. So can you separate the variable? Yes, you can separate the variable. That will becomes y into dy is equal to dz. Now you can integrate them. तो ये कितना हो गया? y square divided by 2 which is equal to z plus constant. I taken as a constant is C2 by 2. So that implies y square minus 2z is equal to C2 is my next arbitrary constant. Fine.
अब जैसे आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ गए, योर टारगेट इज टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आपके कर्व क्या है, दिस वन। तो आपको z की वैल्यू तो जीरो ही है, फाइन। और इस इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू को t ले लो आप। तो x दो बार लिखा हुआ है, आई कैन टेक x इज माई t। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, रूट ऑफ 2t माइनस टी स्क्र। माई पैरामीट्रिक इक्वेशन इज t and root of 2t minus t square. I can substitute the value of the x, y and z in the equation number C1 and C2. तो fill करो, x square t square minus 3t, z is my 0 which is equal to C1, y square 2t minus 2 into 0 that is a 0, fine, which is equal to C2. Fine, you have the two equations. Now always remember your target is eliminate, your target is to eliminate the t। आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन t ली थी ना, तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, ये वाई स्क्र, सेकेंड में वाई स्क्र 2t माइनस 5। तो कैसे आप इसको t को एलिमिनेट कर सकते हो, इफ आई ऐड देम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, तो क्या बच जाएगा, टी स्क्र एंड टी स्क्र विल बी कैंसल, माइनस ऑफ टी विल बी C1 प्लस C2। क्लियर, आप सब्स्टिट्यूशन कर दो सबकी वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है आपकी x, C1 विल बी x स्क्र माइनस 3x माइनस z स्क्र प्लस 6z प्लस C2 y स्क्र माइनस 2z is the required integral surface of the partial differential equation. Look at the second example. Find the integral surface of the equations through the curve. Fine. सबसे पहले इसकी Lagrange equation लिख लो. Then how you can solve? You can see I can take the first and second. तो जैसे और फर्स्ट और सेकंड को लोगे x माइनस वाई विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास क्या रहेगा पीछे, दैट इज माई डी वाई और इट इज अ माइनस एक्स स्क्र। क्या आप सेपरेट कर सकते हो वेरिएबल, यस यू कैन डू, एक्स स्क्र इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्र इंटू डी वाई। नाउ यू कैन टेक द इंटीग्रेशन, फाइन। तो करो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 which is equal to minus y cube divided by 3 plus c1 divided by 3. So your answer will be x cube plus y cube is equal to c1. Fine, where c1 is my arbitrary constant. But make sure your target is to solve the Lagrange equation, और वो आपको मेथड मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन क्या ले सकते हो आप, तो और आपको dx x स्क्र प्लस वाई स्क्र बनाना आपको, तो आई कैन सिंपली टेक dx माइनस dy कर दें, तो जैसे dx माइनस dy करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ व्हाट विल हैपन, x स्क्र प्लस वाई स्क्र विल बी कैंसल and then your answer will be dx minus dy over x minus y. Now again you can integrate them, the left hand side becomes log of z, fine, the right hand side becomes log of x minus y plus log of c2. So can you find the value of the c2, c2 will be z divided by x minus y. Okay? Now you have the two equations. Now your target is to write the parametric equations. क्या क्या parametric equation आएगी, y is already given as a 0, fine, so you can choose any value as a t. Let's say x is my t, so what is the value of the z, a cube divided by t, और आप z को भी t ले सकते हो, चॉइस आपकी है, fine. I can substitute the value of the x, y and z in the value of the c1 and c2. x cube plus y cube, y is my 0, that's a c1, or second equation is c2 will be x minus y, y is a 0 divided by z, fine. These are my two equations. Now your target is to eliminate the t. तो यहां से मैं क्या करूं, इसकी पावर करने के लिए क्यूबिंग, इसकी स्केयरिंग कर देता हूं, इसकी क्यूबिंग, सो पावर 6, फाइन, और यहां से स्केयरिंग कर देता हूं, तो a की पावर 6, नहीं क्यूबिंग करनी पड़ेगी ना तभी पावर 6 बनेगा, फाइन। इफ यू टेक अ क्यूब, a raised to power 9,
C2 cube, which is equal to t raised to power 6. Now you can eliminate t easily. Fine. और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप पहले वाले में से स्मॉल टी की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, C1 raised to power 1/3. I can substitute in the second equation. C2 will be t square C1 raised to power 2/3 divided by a cube. Now you can cubing on the both side, तो आपके पास फिर से वही एक्सप्रेशन रह जाएगा, दैट इज अ C1 स्क्वायर. इसकी वैल्यू दोनों की इक्वेट करोगे ना तो C1 स्क्वायर आ जाएगा. फाइन. नाउ यू कैन सी t खत्म हो गया. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द C1, you can substitute the value of C2 and get the right answer of the problem. Fine. Third example. Find the integral surface. Again, your first target is to write the integral equation or like the Lagrange equation. You can solve the first and second. dx over x square, which is equal to dy over y square. Integrate them. कितना आ गया इंटीग्रेशन, -1 over x, which is -1 over y plus C1. So can you find the value of the C1, which is equal to 1 over y minus 1 over x. Similarly, if you look for the second and the third, that becomes dy over y square, which is equal to minus dz over z square. Now you can integrate them. This expression becomes -1 over y minus minus plus of the C2. So आपकी C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, that becomes 1 over z plus 1 over y. Fine. Where C2 is my arbitrary constants. Can you write the parametric equation of this curve? x की वैल्यू, y और z तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. Fine. So you can choose x is my t. So what is the value of the y? So it's a y of t is equal to t plus y. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, t डिवाइडेड बाय t माइनस 1. ऐसे ही आएगा ना, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ. सो योर पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर t upon t minus 1 and z is equal to 1. Substitute in the given equation. C1 1 over y, y is minus 1 over x. So t minus 1. तो ये कितना आ जाएगा, t will be the LCM 2 minus t. C2 कितना हो गया आपके पास, 1 over z plus 1 over y. Fine. Now how you can solve them? If you add, what will happen, C1 plus C2. C1 plus C2 कितना हो जाएगा आपके पास, t will be the LCM, इसको भी LCM ले लेते हैं, t plus 1 over t. So if you add them, t and t will be cancelled, 3 over t. So if you add them, C1 plus C2 is, so now you can substitute the value C1 1 over y minus 1 over x plus 1 over z plus 1 over y, which is equal to 3 over t. What is that? T is y. चॉइस आपकी है, आप x को भी t ले सकते हो. फाइन. एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. चॉइस आपकी है, कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आप बना सकते हो. नाउ व्हाट विल हैपन, I can solve them. It is a 1 over x, 2 minus, so that is a 1 over y is the required surface of the given curve. Chaliye look at the next one. So quickly write the equations. Fine. From the first and second, you can see, you can easily separate the variable. Fine. Now you can integrate them. You will get x square divided by 2, which is y square divided by 2 plus constant divided by 2. तो आपकी C1 की वैल्यू आ गई x square minus y square. Fine. Second equation कैसे लोगे? There is no separate variable, so I can use any one of the method. Fine. तो आप क्या करो, dx minus dy कर लो, तो कितना आ गया, y minus x. तो ये लास्ट के दो इक्वेशन ले सकते हैं हम. फाइन. तो कैसे हो जाएगा लास्ट के टू इक्वेशन से, dz over z minus 1 और यहाँ पे आपका क्या है, dx minus dy. नीचे भी हम माइनस कॉमन लेके x minus y बना लेता. यू कैन इंटीग्रेट देम. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया आपकी, log of z minus 1 which is negative log of x minus y plus log of C2
सो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द C2? ये नेगेटिव उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी x माइनस वाई, वेयर C2 इज माई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. कैन यू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? फाइन. अब आपका टारगेट पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो विच वन इज अ कॉमन? आप x को t ले लो, तो y कितना हो जाएगा? y from this equation y is 2t, and if you take x and y as t and 2t, तो यहाँ पे फिल करो t square 4t square, that is a 5t square plus 1. Fine. So these are my parametric equation of the curve. Substitute the parametric equation in the value of the C1 and C2. So therefore C1 is x square minus, so it's a minus of 3t square. C2 z minus 1, so that is a 5 of t square into x minus y minus of t, so that becomes minus 5 t cube. So therefore your C1 will be minus 3 t square, C2 will be minus 5 t cube. So आपका टारगेट क्या है? Your target is to eliminate small t. तो कैसे निकाल सकते हो इसमें से eliminate? Very simple. वाई? बिकॉज आप इसका क्यूबिंग कर दो, फाइन, और इसको क्या कर दो, आप स्केयरिंग कर दो और फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों को, फाइन. तो इसका क्या हो गया? C1 क्यूब, और इसको स्केयरिंग करके तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 27 डिवाइडेड बाय प्लस 25, ये तो आएगा ना. और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉल टी फ्रॉम द C1 माइनस C1 ओवर 3, फाइन. सब्सटीट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, तो C2 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस 5, इसका क्यूब करेंगे आप, सो माइनस C1 रेज टू पावर, देन यू कैन स्केयरिंग ऑन द बोथ साइड, फाइन. तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, फाइन. दैट्स द C2, सॉरी, फाइन. यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द C1 and C2 in this equation and you can get the right answer of the problem. Fine, you can substitute the C1 and C2 and x minus y will be cancelled out. After the little calculation, you will get the required answer. Look at the next one. Again, your first target is to write the auxiliary equations. Clearly say there is no common term involved. So my target is to apply the type 2. Clearly say what is the value of the dx over x plus dy over y plus dz over z. Clearly say that number is my 0. एक और भी जीरो बनाना होगा, यहाँ पे x और y के टर्म है, तो मैं इसको x इंटू डी एक्स कर देता हूँ और y इंटू डी वाई कर देता हूँ. तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र वाई स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र विल बी कैंसल आउट, एक्स स्क्र जेड वाई स्क्र जेड. सो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ डी जेड को, सो यू विल गेट दी 0. Fine. Now clearly say from the fourth expression what will happen? Dx over x plus dy over y plus dz over z is my 0. Now you can integrate them, which will happen log x plus log y plus log of z is equal to log of c1. So your c1 will be xyz. Fine. Similarly, from this side again I can integrate x dx plus y into dy minus of dz is 0. So you will get x square by 2 y square by 2 minus of z is equal to c2 by 2. So your c2 will be x square plus y square minus 2z. So can you write the parametric equation? X y z is already a 1, x I can get taken as a t, y is my minus of t. So your parametric equations are t minus t and 1. Substitute in the given c1 and c2. c1 will be minus of t square and c2 will be x square plus y square, that's a 2 of t square minus of 2z. So your target is to eliminate the t. I can substitute the value of the t. It's a minus 2c. Fine. So you will get c2 plus 2c1 is equal to minus 2. Substitute the value of the c1 and c2 and you will get the required parametric or required integral surface of the partial differential equation.
These 6 questions are exercise for you. This is the partial differential equations. Curve is given. You can check whether these answers are verified or not. Another 6 questions are exercise for you. So total you have the 6 plus 6. Total 12 questions are exercise for you. And let me know in the comment box if you have any doubt in this lecture. We will see the next lecture on the surface which are orthogonal to the given curve. How you can find that in a very simple manner. Till then you can share this video with your friends. Like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.